Hey guys, this is me Rabi here. This is Nazu here. We guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। आज़ुराबी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबी नाज़र, नीचे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्लीज उसको भी जाके जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस। तो चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। टाइटल तो गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर है, आपकी बाइक्स के ऊपर है। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया हुआ था, एक आपकी बाइक है बजाज डोमिनार 400, तो हम उस पर कर रहे हैं रिएक्शन अपना। और ये आई गेस पुरानी बाइक है थोड़ी, लेकिन इसके बहुत से कमेंट्स आते हैं कि जरूर करें इस पे रिएक्शन, तो हम उस पर रिएक्शन लेके आए हैं आपके लिए। The Bajaj Dominar 400. Now it's a slightly odd motorcycle because what is it? Is it a power cruiser? Is it a tourer? Well, nobody knows, and neither does Bajaj. Or should I say, neither did Bajaj, because of late they have been pushing the Dominar 400 hard as a touring motorcycle. And the proof of that pudding is in this, the UG2 version of the Dominar 400. Now this might look like an accessorized Dominar, but actually there's only one accessory on this motorcycle. So what's new? Let's find out. बाइक भी आ रही है। Let's take a quick glance at what isn't new. The engine, the chassis and all the internals and even the overall design of the Dominar 400 is unchanged. Now the most obvious change to this Dominar 400 is this rather tall windscreen. Now Bajaj says that this has been designed using CFD or computational fluid dynamics, so the airflow around it is very smooth and it doesn't flutter even at high speeds. But do you need a windscreen on a bike that does about 150 kph max speed? Well, maybe not. But if you're riding in cold weather or touring in cold weather, I think having a windscreen up front will definitely be a bit of a help. Now if you peep behind the windscreen, you will see this. Now it might look a little odd at first glance, but it's actually a brilliant idea. This is a mount for a mobile phone, and any mobile phone mount that fits on your handlebar will fit on this. The only concern though is that because of its position, the phone might end up obscuring your display. And under the dashboard you have a USB phone charger, which is definitely a must-have if you're out touring long distances. And of course from the front you really can't miss these new knuckle guards. But on a road biased motorcycle like the Dominar 400, do you need knuckle guards? Well, I don't think so at all. But Bajaj says that they might be some help if you're riding in cold climates to keep your hands out of the cold wind. But for me, I think the main function of these is aesthetic. I mean, they do look rather pretty with their two-panel floating design, and they are fairly well built as well. They've got a solid metal bracket behind it to hold the whole thing together. So if you were to drop the bike, they might serve well in trying to save your levers. And on the side, of course, you have these new crash guards. Now, thankfully, they have been done quite tastefully. Like all the Bajaj crash guards, they are not too big, so they do look quite nice. And this one, well, apart from saving the side of your bike in a crash, it will also protect your radiator, which is definitely a good thing. Now you also get a metal bash plate under the bike, so just in case you took your Dominar 400 over some really rough roads, the engine will stay safe from hits. And of course, around the back you have a brand new tail rack. Now this tail rack actually has got mounting points for a tail box, and Bajaj says that this tail rack can take weights of about 7 kilos, maybe a couple of kilos more as well, which is definitely a great thing if you're out touring. And of course, as part of this tail rack you have this, well, backrest. Well, not really, it's called a backstop because it's meant to sort of prevent the pillion from sliding backwards under hard acceleration. And since this Dominar 400 is built on the KTM 300 platform, it does have decently quick acceleration. So this definitely feels quite nice for your pillions when you're sitting for a long distance. The bits that we just saw, well, those are standard on the new Dominar, and we come to the only accessory that is on this bike, and that is this saddle stay. Well, the pair of them on either side, these cost rupees 650, and they help you mount saddlebags on the bike without interfering with any part of the motorcycle. This new Dominar apparently spawns from all the odysseys that Bajaj has done with this bike. And who better to speak about the odysseys on the Dominar
than Canada Lewis herself, who rode a Dominar solo all the way from India to Australia. So Canada, obviously on your journey to Australia, you don't have this Dominar and these accessories. So how did you manage your luggage on your journey? It was pretty difficult for me because I had to source the accessories from different parts of India, and it got pretty difficult is because I did not plan the trip so well in advance, so it was all last minute. So to get all the accessories in a few days, it was very difficult. So this is really nice because it comes loaded with all the accessories, so you have it all there. So if you could pick any of these accessories on your journey, what would you have picked? I would definitely pick the hand guards because I think that's the most important thing on a motorcycle. When you fall, it saves you and the motorcycle from damage. And I would definitely want a saddle stay as well because for anyone that's using panniers, I think this is such a easy addition to the motorcycle. Easy to just clip on the bags and take off. And yeah, I think the improved mirrors on this is also pretty good because last time I had to get mirrors from a different motorcycle. Yeah, and the last one is the phone holder. It's just so convenient to have a phone holder instead of putting it on the handlebar. So that in a nutshell is the new Bajaj Dominar 400. Now as we mentioned before, except for the style stays, all these bits that you see are going to be standard going forward. And the best part is that you can retrofit all of these except for the USB charger on any of the previous generation Dominars very easily at any of your Bajaj showrooms. Now with all these extra bits, there is some good news and some bad news. The good news of course is that the price hasn't gone up all that much. You pay just rupees 5,000 more than the current Dominar 400, and that still makes the Dominar 400 a very well priced motorcycle. As for the bad news, well, that is weight. Now the Dominar 400 was already a fairly heavy motorcycle, and all these bits have added 7 kilos more, so it now comes in at 193 kilos per weight. So do all these bits make the Dominar 400 a better touring motorcycle? Well, I'm still not entirely convinced. We still think Dominar 400 is not the best bike out there for touring. However, if you do want to go touring on the Dominar, all these bits will make your life just a little bit easier. This was the bike Bajaj Dominar 400. मुझे तो पर्सनली ये बाइक बड़ी खूबसूरत लगी है, बड़ी स्पोर्टी सी लुक थी इसकी और हैवी बाइक भी थी बिकॉज 200 kgs का वेट था, 193 kgs, तो ऑब्वियसली इसका वेट तो था। और ये इसको एज ए एडवेंचर बाइक भी कहते हैं, यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि उन्होंने बहुत सी स्पेस दी हुई है, पैनियर्स की जगह भी दी हुई है, पीछे आप लगा सकते हैं पैनियर्स। और उसकी लुक भी बड़ी प्यारी थी, तो मुझे प्यारी लुक लगी है उसकी। और उसके अंदर उसका इंजन भी इतना अच्छा है उसका कि वो आराम से आपको किसी भी एडवेंचर के एरियाज में, हिली एरियाज में लेके जा सकते हैं आप। तो एक तो ये, और एक ये लड़की जो दिखाई थी उन्होंने, जिन्होंने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया है थ्रू बजाज डोमिनार 400, तो एक तो बहुत बड़ी चीज़ है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बजाज कंपनी के लिए भी कि वो बाइक इतनी अच्छी चली है, वहाँ तक पहुँची भी। ऑस्ट्रेलिया एक ज़्यादा कॉन्टिनेंट है और तो एक बहुत अच्छी बाइक थी। और इसकी लुक भी अच्छी थी, जो दिखाई तक कि उसके जो हैंडल्स है उसके साथ भी उन्होंने एक कवर सा दिया होता ताकि लोग हीट से बच सके वैसे, लेकिन वो वैसे बता रहे थे कि शायद हो सकता है कि उन्होंने खूबसूरती की वजह से ज़्यादा उस पर फोकस किया है और वो खूबसूरत भी लग रही थी, खूबसूरत बाइक लगी मुझे तो एक। और ये बाइक थोड़ी पुरानी भी है, लेकिन ये लोगों ने कमेंट किया हुआ था, आप भाइयों ने, आप लोगों ने कमेंट किया हुआ था, तो हमने उस पर किया है बजाज डोमिनार। मैंने एक चीज जो डिफरेंट नोट किया है ना इस बाइक में, वो ये थी क्योंकि उसका जो ऊपर वाली जगह थी ना, वो सीट बैठने वाली और ऊपर से जो बॉडी थी वो ग्रीन थी, और बाकी जो नीचे ऑल इन ऑल बाइक थी ना वो ब्लैक थी, उसमें कोई भी और कलर नहीं ऐड था। जो मैंने अभी ये बाइक देखी है उसका मैं बता रही हूँ, क्या पता और कलर भी हो, बट उसकी वजह से ना वो बाइक ना थोड़ी छुपी छुपी सी लग रही थी। आई डोंट नो व्हाई, वो ना लुक उसकी ना बहुत बड़ी नहीं लग रही थी मुझे, वो ऐसे कॉम्पैक्ट सी लग रही थी बाइक। मे बी कलर वो डार्क था नीचे वाला ब्लैक, जिसकी वजह से ना उसके वो स्लेंसर शो हो रहा था, क्योंकि वो ऑल इन ऑल पूरा ब्लैक था और ऊपर वाली खाली बॉडी ग्रीन शो थी, बाकी पूरी बॉडी जो थी ना वो नीचे से ब्लैक थी। टायर्स तो वैसे ही ब्लैक होते हैं, तो बॉडी भी पूरी ब्लैक थी ना, मर्ज हो रहा था। तो वो मर्ज होने की वजह से ना वो बाइक है बहुत हैवी बाइक है,
लाइक स्पोर्टी बाइक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ना छुप रहा था, लाइक वो उसमें बहुत ज्यादा ना मर्ज हुई हुई थी, जिसकी वजह से उसकी नीचे से अगर कोई और कलर ऐड होता तो शायद वो थोड़ा सा इनहैंस हो रही होती चीज, वो इनहैंस नहीं हुई। मुझे ये चीज डिफरेंस लगी है, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी बाइक्स देखी ना उनमें ये होता है कि नीचे भी या तो रिम्स में या साइलेंसर या कुछ भी किसी भी जगह पे कोई कलर ऐड होता है ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट लगे। वो कलर ये बाइक भी पुरानी है तो शायद तब उस टाइम के लिए हो सकता है ऐसा हो। अब तो लेटेस्ट जो हमने बाकी की हो तो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, बहुत लेटेस्ट है, ये बात हो सकती है। लेकिन वैसे अगर रोड पे जब चलाते हैं वो दिखाते बड़ी स्मूथ राइड लग रही है, बड़ी खूबसूरत लग रहा है और लुक बड़ी प्यारी है, जरा अच्छी सी ग्रैंडर सी लुक थी, थोड़ा बड़ी लुक थी उसकी, बड़ी लुक थी, अच्छी लुक आ रही थी उसकी। बिल्कुल। तो मुझे जो एक मेनली डिफरेंस फील हो रहा था ना देखते हुए थ्रू आउट बाइक के, क्या इसमें डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर, तो मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा सा कलर की वजह ना मर्ज आउट हो रही है, और जितनी वो ग्रैंडर है वो ब्लैक की ब्लैक नीचे वाली सारी होने की वजह से ना वो उसमें ना दब गया। ये मुझे एक मेजर डिफरेंस लगा। बाकी जो फीचर्स की बात वो करते, फीचर्स उसमें काफी सारे हैं, और बाइक जो है वो काफी पावरफुल है, क्योंकि वो बता रही थी जैसे कि वो ऑस्ट्रेलिया तक लेके गए, डेफिनेटली अच्छी बाइक है, तो वो इतनी दूर तक गई है वहां तक, तो मतलब कि उसका इंजन इतना पावरफुल होगा। तो लुक वाइज ठीक थी, अच्छी थी। आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या टेक है ऑन दिस बाइक, आप लोगों ने ली हुई है या कोई लेना चाह रहा है, ली हुई है कमेंट्स में जरूर बताइएगा हमें किसके पास है। बिल्कुल बताइएगा। तो हमारा तो यही रिव्यू था, यही रिएक्शन था ऑन दिस बाइक। आई होप सो कि आप लोगों ने वीडियो को, रिएक्शन को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।